Good evening and a very warm welcome to the Black Hole. Today we are going to explore intricate world of life's diversity and complexity to understand mysteries behind the existence of male and female forms in the animal kingdom, as well as the energy invested in mating behaviors and the efforts made by scientists to engineer the very essence of life, that is sex, viewed through the lens of evolutionary theory. We are very grateful to our speaker. We have Moeez Ahmed Khan with us. मेरे दाईं जानिब आप मौजूद हैं. He's a synthetic biologist now based at Imperial College London. His research focuses on constructing super spreading genes that can be used for malaria eradication. His work involves synthetic biology, genetic engineering, classical genetics, developmental biology and entomology. आप सब लोगों की आमद का शुक्रिया, ख़ास तौर पे एक ऐसे मौजू के लिए जो बज़ाहिर हमारे यहाँ इसको बहुत नापसंद किया जाता है, हालांकि इसके बगैर हम में से कोई भी इस दुनिया में शायद बल्कि यकीनन आ ना पाता. Please turn your cell phones to silent mode so that there is no distraction. Moreover, when the house is open for Q&A, आप भी इस गुफ्तगू में शरीक हो सकते हैं. बस आप अपना हाथ बुलंद कीजिएगा और माइक्रोफोन आने के बाद हाथ में आने के बाद आप अपनी बात कीजिएगा. So ladies and gentlemen, let's dive in and welcome Moeez Ahmed Khan. Thank you. Before I start, by the way, I think we also should clap for the entire Black Hole team. I saw the video जो उन्होंने produce किया. It's not easy to have this production quality and this entire team. So, okay, I'm going to talk about sex. मुझे क्या दिलचस्पी है सेक्स के अंदर, apart from any normal humans interest in it. मैं एक biologist हूँ, मैं bioengineer हूँ specifically, तो I'm very interested in engineering biology in ways that it hasn't evolved before. तो expertise भी मेरी यही है. I am a genetic engineer, but I'm not an evolutionary biologist. Some of the stuff I'm going to talk about over here is evolutionary biology related. So there is a limit to my expertise, मगर I'm delving into it क्योंकि I'm curious. इसका ये मतलब ये है कि आप मेरे से सवाल पूछेंगे तो हो सकता है मुझे जवाब ना बताओ, but I will speculate as much as I can or provide you as accurate a response as I can. अच्छा, दूसरा ये, before I begin this talk, I think it's important to talk about how we'll talk about sex. Generally, I think my opinion is कि पाकिस्तान में we're quite reserved about these things. And I think it makes sense. You know, sex is a very private act, usually. So it makes sense that we have cultural norms that restrict that conversation. Magar, मुझे लगता है कि when we do that, तो फिर it restricts the sort of questions we can ask, the sort of scientific questions we can ask about what is a very interesting phenomena. Dawkins साहब ने कहा है कि probably the most important time in your life is when you were conceived, when your dad's sperm met your mother's egg, right? And I'll talk about why that's an important time. तो एक तो ये बात, तो I'm hoping कि when we discuss sex today, वो जो veil है ना restrictions का और reservation का, वो आप उतार दें. कम से कम as far as scientific questions are concerned. तो I'm hoping कि any question you ask, any question you think you want to ask, you can actually vocalize and verbalize. And I hope there's no judgment associated with it. अच्छा, तो ये, अच्छा, अब why is sex interesting? Why is it a curious thing? Because most animals do it, मगर most animals will also reproduce asexually. We don't understand why most animals will reproduce sexually. ज़्यादातर क्यों sex होता है और asexual reproduction इतनी कम क्यों होती है? मैं शुरू में ना थोड़ी सी आपको definitions बता देता हूँ. Again, sucks to erase this, मगर I'm going to draw what is a very basic interpretation of asexual reproduction and sexual reproduction. Because I know not everyone has a biology background over here. So for our purposes, asexual क्या होता है और sexual क्या होता है? Asexual होगा, which is what you will commonly see in bacteria and छोटे-छोटे organisms. By the way, किसी ने कभी आलू का पौधा देखा है? Right. Yes. Have you done this thing where you like cut a piece of the potato? Yeah, you look at the potato, उसके ऊपर से एक bud निकल रहा होता है, right? So if you were to plant that bud into the soil,
that would be a clone of the original potato, right? और फिर उसमें से पौधा निकलता है. तो that's asexual reproduction. Simply put, ये हमारा आलू है और जो अगली पुश्त उससे बनती है दूसरा आलू, they are clones of each other. उन दोनों के बीच के DNA में कोई फ़र्क नहीं है. Whereas for sexual reproduction, ये फ़र्ज़ करें हमारा एक ऑर्गेनिज्म है. Yes, okay. ये हमारा दूसरा ऑर्गेनिज्म है. इन्हें भी मैं मेल फीमेल नहीं कह रहा. That distinction can come later on, but you know, this is one organism, this is a distinct organism. These both have to combine their DNA. 50% comes from this one, 50% comes from this one, and it gives you the second generation. Okay? Primarily ये फ़र्क है. There are caveats. Biology is the science of exception sometimes, so the way sex happens in different organisms is different. But for our purposes, जब हम define कर रहे हैं sex को, you need two organisms. Half of the DNA comes from the mother, half from the father, and you get the next generation. Okay. Right. I'm going to start a presentation now. क्योंकि पहले मैं आपको introduce करूँगा to the weird ways in which animals will reproduce sexually and asexually. And I'm hoping that you can enjoy these quirks as much as I do. Okay. Organisms can... आगे पीछे नहीं हो रहा. Okay. Organisms can have sex in one of two ways. Sorry, reproduce in one of two ways, asexually or sexually. I'm going to show you a video of asexual reproduction. This is a very interesting organism. It's called planaria, या फिर flatworm इसको कहा जाता है. इसकी खासियत ये है कि you will see this in the video hopefully. हाँ, so if you play the video, ये गंडोए की तरह की एक चीज़ है. It's just a simple worm. If you cut it in half, what you will notice is कि जो उसका एक हाफ है वो एक वर्म बना देता है, दूसरा हाफ दूसरा वर्म बना देता है. This is how this worm reproduces. इसको आधा आपने काटा, ये इसका सर है, ये इसका दुम वाला हिस्सा है, and eventually as the days progress, this tail is going to form a second head. ये इस scientist ने artificially किया, तो he used a knife to cut the worm. But this worm likes this to happen. This is how it reproduces. In fact, biologically, nature में ये अपने आप को यहाँ पे constrict करता है और जान के अपने आप को काटता है ताकि इस जैसी एक दूसरी नस्ल बन सके. अच्छा, इसकी बड़ी important implications हैं. नंबर 1 तो ये बात है कि इसका मतलब है कि 10,000 साल पहले जो worm था, जो इसका ancestor था, उसका DNA is almost identical to the DNA of the worm you're seeing over here. Right? क्योंकि it's a clone, it's just clones repopulating themselves. Apart from a certain caveat जिसको हम कहते हैं कि DNA के अंदर कभी कभार mutations आ जाती हैं. अच्छा, कभी किसी ने छुपकली मारी है? मारी है? जब आपने छुपकली मारी है तो आपने देखा है कि कभी उसकी दुम उतर जाती है और छुपकली भाग जाती है. फिर अगले 1-2 दिन बाद आपने कभी ये देखा है कि वो छुपकली की दुम जो थी उसके अंदर कुछ निकल रहा होता है. राइट? ओके. हाँ, रीग्रो कर रही होती है. राइट. ओके, सो दिस इज द सेम प्रोसेस दैट हैपेंस इन दैट लिजर्ड. यू हैव रीजनरेशन ऑफ अ लिम्ब जो कि पहले उतर गई थी, कट गई थी, बट अब वो दोबारा से ग्रो कर रही है. साइंटिस्ट्स आर वेरी इंटरेस्टेड इन प्लेनेरिया. अच्छा, बाय द वे, ये इसका सर है जो उसके टेल वाले पार्ट में से निकल आया है, एंड यू कैन एक्चुअली सी द आईज एज वेल, द लाइट सेंसिंग ऑर्गन्स. साइंटिस्ट्स आर ऑल्सो वेरी इंटरेस्टेड इन प्लेनेरिया क्योंकि the idea is कि अगर मैं खुदा न खास्ता कभी अपना हाथ काटूँ, right? And this is important for amputees. The US government is investing a lot of money into this research क्योंकि veterans, US Army के will have amputations. And then regeneration is interesting. So the idea is that I can regrow a limb, I can regrow an organ. How does this worm do it? And how can I engineer it in humans? Okay, this is a caveat. The important part is कि planaria सदियों से asexually reproduce कर रहा है, ये sexually reproduce नहीं करता. तो कहने का मतलब है कि जानवर कर सकते हैं asexually reproduce. You know, this is not surprising. This happens. अच्छा, next मैं आपको दिखाऊंगा. Can we have the next slide? Okay. मैंने छुपकलियों की बात की. This is the Mexico whiptail lizard. This is another animal that reproduces asexually.
मगर ये बड़ी इंटरेस्टिंग है, इस लिजर्ड में सिर्फ फीमेल्स होती हैं, मेल्स होते ही नहीं हैं. अच्छा, अब मैं क्यों कह रहा हूँ कि फीमेल्स होती हैं, मेल्स नहीं होते, बिकॉज दैट डिस्टिंक्शन कम्स ओनली व्हेन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हैपन्स, राइट. अगर आप सेक्स नहीं कर रहे तो वाई एम आई कॉलिंग इट अ फीमेल और मेल. Biologists tend to define things as female also when they are the ones laying the eggs or when they are the ones that are producing the next generation. इसकी एक वजह ये है क्योंकि if you are a female or if you are the one that is laying the egg, I care a lot about you क्योंकि आपने बहुत ज़्यादा एनर्जी डालनी है in the pregnancy but then also into the egg itself ताकि वो सर्वाइव करे और वो अगली पुश्त बना सके. नंबर वन ये बात. दूसरी बात ये, पहले जो ये स्पीशीज़ है ना लिजर्ड की, ये मेल और फीमेल होती थी. हुआ ये कि इसने मेट किया विद अ लिजर्ड फ्रॉम अ डिफरेंट स्पीशीज़ और जो रिजल्टिंग फीमेल्स बनी वो एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर सकती थी. एंड द मेल्स वर इनफर्टाइल, सो वी डोंट केयर अबाउट द मेल्स. अच्छा, ये फीमेल रिप्रोड्यूस इस तरह करती है कि दो फीमेल्स हैं, वो एक दूसरे को इस डेजर्ट में ढूंढेंगी. They will go through all the acts of sex or mating, but they will not fertilize anything. Sperm is not involved. The act of sex somehow triggers hormonal changes in this lizard, which results in the eggs being laid. Or wo eggs normal and they have the same amount of DNA you would expect for a healthy embryo in this lizard species. And then, yeah, they go to term, they become more lizards. So again, this lizard, it's producing clones of itself. Magar, so it's asexual reproduction, but it's doing it in a slightly different way than the flatworm. Flatworm जो है वो सब कुछ regenerate कर रहा था. ये lizard जो है इसमें hormones involved and there is a sexual act, but it's parthenogenesis. It's a virgin birth. Okay. तो ये हो गई हमारी lizard. So asexual reproduction happens. एक और मैं अगर अगली slide पे हम जाएं, I'm going to talk about this. These two spiders, by the way, they are from the same species. Yeah. Which one do you think is the male, by the way? Okay, why is the male smaller? Why do you think that? Spiders are sexually dimorphic. Yes. Males are smaller than the females. Males in general for a lot of species tend to be smaller. अच्छा, ये है Australian redback spider. You can tell why it's a redback spider because the females have a red back. The best way to describe the male in this species is that he's quite desperate to have sex, basically, because when he finds a female, तो फिर while he's mating with the female, he actually flings his body on the female's fangs. उसके जो fangs हैं उस पर वो छलांग मारता है ताकि वो female उसे खा सके. एक तरह से वो अपने आप को he's committing suicide so that the female can eat it while the sex is happening, while copulation is happening. और by the way, अगर वो फीमेल इसको ना खाए तो ये दोबारा ये हरकत करता रहता है, ये छोड़ता नहीं है जब तक ये ख़त्म नहीं हो जाता. You know, it reminds you of that परवाना जो कि शम्मा के आगे बस जल के राख हो जाना है. मैंने तो that it's something what's happening here. Now, why do people think, अगर मैं आप लोगों से सवाल पूछूं, why do you think ये male spider ये काम कर रहा है? You know, why is it intending to get eaten by the female? Because that's like it's providing nutrition. Also, the high point of his life. Sorry. Okay. So, what was your response? Sorry, I didn't. Like, I don't know. Programming. Okay, sorry. Programming I see that this is the end point of his life कि ये कर लेगा. I'm sure और भी ऐसी species हैं जो अपनी birth के लिए वो अपने आप को मार लेते, like octopus mothers sometimes do that. Yes. Okay. I don't know about octopus mothers, but one hypothesis जो आप कह रहे हैं, आपने जो पहले बताया, is कि ये nutrition provide कर रहा है उस female को, which makes sense in some weird way कि अगर you know animals will do this biologically. आप दो ज़रूरी काम करेंगे अपनी ज़िंदगी में, including humans, by the way, animals and humans. One is to survive, be born and survive. The other very important task is reproduce biologically. Because if you don't reproduce, your genes don't make it to the next generation. And आपकी जो genetic information है, जो आपने इतने सालों से अपने अंदर carry की, वो ज़ाया हो गई, वो कभी आगे बढ़ी ही नहीं. तो biologically, this is quite important for organisms.
you say that this is altruism because the species is being carried forward, but the individual is being sacrificed? Yeah, I wouldn't say it's altruism. I think, for me personally, the right way to think about it is that it's genes acting selfishly rather than in the interest of the individual. कहने का मेरा ये मतलब है कि when evolution occurs, it occurs on DNA. DNA is the molecule that's mutating, and DNA is the molecule that is progressing. And so what likely occurred, my speculation in the spider is, there was a gene that realized कि मेरे propagate होने के लिए ज़रूरी नहीं है कि spider reproduction के बाद ज़िंदा रहे. Male spider is not needed after the reproduction has happened. मेरे propagation के लिए ये ज़्यादा ज़रूरी है कि वो जो male spider है वो जब reproduce कर रहा है वो लगा रहे. You know, वो it doesn't remove itself from the female until the fertilization has happened, even potentially during its death. There are speculations कि evolution में altruistic genes भी हो सकती हैं, but I sort of more concur with the idea that genes act selfishly, and they are the unit of inheritance and evolution. I will talk about group selection, यानी कि species के लिए क्या चीज़ बेहतर है और फिर individual के लिए क्या चीज़ बेहतर है, क्योंकि it's interesting how sex evolved and वो दो चीज़ें आपस में कैसे interact करती हैं. Do you have a question? Okay. You're saying that it's genetically coded in us, the need to reproduce. Yes. What if someone doesn't want to reproduce? You are then applying conscious thoughts and control over a biological need. Humans can do that. Other animals can probably do that as well. Do you want me to come back to your question, or shall I respond more to? Okay, so biology, there was for a very long time, there was this idea of bioessentialism. अच्छा idea ये है कि मैं इंसान हूँ, मैं सदियों से, you know, from the single-celled organism, there was a chimp that evolved, and then from chimps, well, as the evolutionary process happened, इंसान आए, right? तो for the longest time हमारा DNA mutate करता रहा है, and we have been selected ताकि we can reproduce. And there are important biological mechanisms जो हमारे अंदर हैं, right? When you inherit a certain gene, you can't really change the DNA that you have. You can't change the genes that are responsible for your height unless you're doing genetic engineering. You're stuck with that. Biologists used to think that, you know, that applies, some biologists thought that applies to your psychology as well. That intellect, for example, is primarily genetically determined. But it seems more and more that though you have a genetic blueprint, it is firstly also influenced by your environment. So there is a random level of unpredictability in it. But also, मेरे पास अगर कोई genetic blueprint है, I can still apply conscious thoughts and decision making कि मैं उसको जो मेरी instinct मुझे कह रही है उसको follow through करूँ कि ना करूँ, right? So your point about that we are designed to reproduce but we may not choose to reproduce makes sense because it happens, right? Humans will do that. This happens very often, by the way. As I talk about sex, I invite you guys to think about the subconscious ways in which your need to reproduce is influencing your thinking, and the ways in which you try to restrict it as well. It's quite interesting. Okay. Acha, by the way, ये जो spider है, this isn't the only one who commits suicide while it's having sex. There are also praying mantis की काफ़ी species हैं. In fact, there's one species of a mantis जिसमें female की जो 60% diet है वो सिर्फ males हैं. That's the primary meal that it's going to eat, which is quite interesting. As a biologist, you will ask the question कि क्यों होता है? So they did some research on this spider particularly, and they found कि ये जो female spider है ना, ये usually एक ही दफ़ा mate करती है. उसकी वजह ये है कि while the copulation is happening, while the sexual process is happening,
After that, the male actually plugs the female. It's called a sperm plug, which stops any other males from entering and depositing sperm. Which means कि ये मेल जितनी देर तक उस प्रोसेस में लगा रहेगा उतना टाइम इसके पास होगा ताकि it can actually produce its sperm plug and stop the female from having sex with any other males that may be around it. So this is an example of competition. This is an example of the male spider thinking कि I need to maximize the chances कि सिर्फ मेरी genes और मेरे ही बच्चे ये female produce करे, किसी और के साथ mate ना करे, तो फिर I'm ready to sacrifice my life for that endeavor. So that's quite curious, okay. He's spending a lot of energy trying to make sure कि ये sexually reproduce करे. Question is कि ये sexually क्यों नहीं कर सकता था, right? Why did biology evolve something so strange and so weird जिसमें इतना बड़ा आपको, you have to basically commit suicide in order to have sex. Can we have the next slide? क्योंकि okay, perfect. अच्छा, ये है sockeye salmon, and they're found in the rivers of Alaska, Canada, and this is sort of the region they're found in. They're beautiful creatures, by the way. This picture does not do it justice. अगर आप कभी असल में आपको मौका मिले कनाडा जाने का या वैसी YouTube पे वीडियो देखने का, beautiful iridescent red glowing colors that they have. These colors are a consequence of their sexual development. ये जब शुरू होती हैं तो फिर ये grey होती हैं. In fact, they are born in a river or in a set of rivers as grey colored salmon. Or after birth, they go out of those rivers and they venture into the sea. By the way, this entire distance is roughly one salmon in its lifetime will make this journey twice from the river back to the sea and from the sea back to the river. That's about 2,500 kilometers, which is quite long for the salmon, especially if you consider कि ये salmon river से निकलेगी, sea में जाएगी, sea में खाना खाएगी, and then it has to go back to reproduce. Because they'll go back into the rivers and find females over there and reproduce with them. So that's 2,500 kilometers. And when they're going back, they have to go upstream. यानी कि पानी इस तरफ आ रहा है, salmon ने उल्टे रास्ते बहुत ज़्यादा energy लगा के it has to make sure कि it goes back into the river where it was first born. While it's on that journey, a lot of these salmons actually die. They die partly क्योंकि वो जो upstream river है वहाँ पे bears इकट्ठे होते हैं, and those bears will usually try to hunt these salmon. So that's number one. They also have flying birds, large birds that will prey upon these salmon. And then also a lot of these salmon just die of exhaustion. But despite the cost, this salmon will say कि नहीं, I'm going to go upstream in that river, go back to where I was born, I'm going to find a female, I'm going to mate with that female, and then I'm going to die. Immediately after mating, these salmon die, by the way. And if you notice, ये is salmon का male equivalent है. This is the female, and the males have these massive jaws. Why do you guys think these males have these jaws? To fight each other. That's right. This isn't for food. The reason they develop these jaws is ताकि मैं एक और male को पकड़ के उसको हटा के परे कर दूं ताकि मेरे पास opportunity हो to mate with all the females, and this other male doesn't have that opportunity. So there's competition as well. Again, this is an animal जिसने बहुत ज़्यादा investment की है in just making sure it has sex before it dies. So again, strange. Sex requires a lot of energy. It requires a lot of effort, time. It requires specialization. It has to make these jaws. Why are animals doing this? Can we go to the next slide? Okay. Peacocks, right. Do you guys know that the male peacock is the one which has all these pretty feathers? Yes, this is quite common. Darwin, when he talked about peacocks, he said that the sight of a feather in a peacock's tail makes me sick, because he couldn't explain it. Darwin had this brilliant theory of evolution by natural selection, organisms
के ऊपर एक selective pressure आता है from their environment which forces them to adapt to survive, and the organisms with the best survival, with the best features designed to survive in that environment pass off their inheritance, pass off their genes, he didn't know it was genes at the time, to their progeny. And this is how from one generation to another you have evolution, right? You have organisms changing from one generation to another. He had this brilliant idea, magar when he looked at peacocks, he was like, hold on, the feathers in a peacock, inki kya survival advantage hai inka, right? How are the feathers in a male peacock helping it to survive? Do you guys want to venture hypotheses for why that's the case? Like क्या वजह हो सकती है कि मेल पीकॉक की जो इतना बड़ा इसके पीछे छाता है जो कि बाद में बहुत खूबसूरत है, why is it helping it to survive? To attract a female? It just want to look stronger than the other males, so it's kind of like showing off. So Okay, it wants to look stronger than the other males, so it's showing off. All right, you had something similar to say? Yeah, it's like it's Helping their genes to survive. Also, the color or the vibrancy of the feathers can indicate how healthy they are or how strong they are. That's why I guess evolution just went a little crazy with birds. Okay. The colors indicate how strong or how healthy the peacock is. Yeah. And then you're speculating that the evolution Just was like, went bas crazy. anni pa do, bas, like just, okay. You guys are mostly right. They did this research on peacocks. It's still a little controversial. And it's surprising how years after Darwin, by the way, Darwin was doing this work in what, like the 1860s, mid 1800s. I find it really funny and interesting कि गालिब मौजूद थे उस ज़माने में in India while this work was happening. The War of Independence was happening in South Asia while Darwin was doing this research. I'll talk about Mendel as well. He was around at the same time. That's a side note, but they did experiments on peacocks, and what they did was you can pluck the feathers of a peacock, you can reduce the number of eyes जो उसके अंदर हैं, or you can add them artificially. And they found that the peacocks with roughly 165 to 170 eyes in their plumage were the ones जो कि female सबसे ज़्यादा prefer करती थीं. If you go beyond that number, so the females don't really care about you, but they're like, this is as good as anyone who has 165. But if you go below that number, the females are not attracted to you. That's interesting. Why is that happening? Well, they found that peacocks that had 165 to 170 roughly eyes, if you sequence their DNA, you find that they have the healthiest set of genes required for immunity. So essentially, what we think is happening is that somehow the peacock, by maintaining this massive plumage, is signaling that I have very healthy immunity, which I am likely to pass to your generation. If you're a female, you should pick me because हमारे बच्चे जो हैं बहुत healthy होंगे. I say this is happening, मगर consciously, I think, and so do most scientists, that the female isn't really thinking that, ooh, 165 feathers, this is perfect. It's probably a subconscious process that involves a lot of visual cues जो कि हम पूरी तरह समझ नहीं सकते. मगर खैर, Darwin, by the way, while he was alive, speculated on this. He developed his theory of sexual selection, and he said that probably हो क्या रहा है कि the female is the one who's deciding who she mates with, and that applies a pressure on the peacocks कि वो evolve करें और वो इतना खूबसूरत plumage बनाएं. And he was right. That theory has been upheld using these experiments जो मैंने आपको describe किए हैं. मगर सवाल मेरा ये है कि भाई आप एज अ पीकॉक आप क्यों इतनी मेहनत कर रहे हैं, आप एसेक्सुअली क्यों नहीं डिवाइड कर सकते थे? Why again is the peacock having sex and investing so much time and effort in developing this plumage when asexual reproduction is so easy? Can we have the next slide? Okay. ये मैंने आपको मसले बताए हैं सेक्स के साथ कि एक तो टाइम बहुत लगता है. There's a really funny quote by some biologist who said that
his son asked him about sex, and he said that it's very expensive and it doesn't last very long, which I think is true for the animal kingdom as well. So that's one problem. Sex is expensive. It requires a lot of time, energy, and investment. It requires a lot of specialization as a male. You have to be a male and a female. They're very distinct organisms. But also, this guy, John Maynard Smith, said that really the main problem with sex is that it's the males. We're the problem. Males are a cost for species. इससे मेरा क्या मतलब है? तो I'll go back to my board. अच्छा, कभी किसी ने, आप लोगों ने खमीरी रोटी तो यहाँ पे खाई हुई है सब लोगों ने, राइट? ओके, खमीरी रोटी कैसे बनती है? खमीर क्या होता है उसके अंदर? यस, खमीर इज यीस्ट. आप फ़र्ज़ करें कि मैं दो तरह की खमीरी रोटी का आटा बना रहा हूँ, राइट? एक, उसके अंदर जो यीस्ट जा रहा है वो एसेक्सुअली डिवाइड करता है. एक जो उसके अंदर यीस्ट जा रहा है वो सेक्सुअली डिवाइड करता है. And I'm making certain assumptions, but let me draw this out first. So, ये हमारा asexual yeast है, और ये मैं एक yeast cell के साथ, मैं उसके अंदर मैंने पानी डाला और आटा डाला और yeast का एक cell डाला और वो मैंने परे रख दिया साइड पे. और एक ये मेरा sexual yeast है और इसके मैंने दो डाल दिए. In fact, let's start with 2 for both. Okay. Now, you guys know that the reason वो आटा expand करता है is because the yeast is breathing वगैरह. Okay, fine, it doesn't matter. But my point is, if we assume that the number of children, the number of next generation organisms जो ये दोनों yeast produce करेंगे is the same, तो what happens is कि हम 2 से शुरू कर रहे हैं, okay? ये 2 पैदा करेगा, ये वाला 2 पैदा करेगा. इन दोनों को इकट्ठे, राइट, they are going to make 2. Okay, they have to meet and then they will have to make 2, whereas by this generation within the same amount of time ये जो asexual yeast है इसने 4 बना लिए. And you can keep doing that process, and what you will find is that the cost of sex is roughly 2-fold. क्योंकि मुझे एक male yeast दरकार है, जो कि technically the only thing that they're doing is producing sperm, which by the way in animals, I talked about that lizard doesn't need a male. Animals can do this thing where they can the females can produce eggs. Really, John Maynard Smith said that the problem is the males. You have a limit. You need a male and a female to produce the next generation. And if you assume that the number of children is the same per generation, so this yeast will grow a lot slower than the asexual yeast. And if you do this experimentally, you'll find that yeast to reproduce asexually, usko 1 घंटा लगता है roughly for the next generation, and to reproduce sexually, it takes about 8 hours. So experimentally, this holds true. I'll go back to my presentation. And John Maynard Smith, by the way, was quite an interesting person if you guys are interested. He went to Eton College, and it's quite famous in England because सारे Tory members और जो parliament में जाते लोग and they're from Eton. And he realized कि वहाँ पे science नहीं पढ़ाई जाती बहुत ज़्यादा, which I find quite surprising. Like, it's one of the premier colleges in the UK, and he was irritated by the fact that there's no science there. He became a communist while he was at Eton, and he was a card-carrying member of the Communist Party. A very interesting guy. He then tried joining the military, even though the Communist Party, उस वक्त उनका ये था कि you can't join the military, it's against their policy. He was rejected by the military because of his glasses. But okay, this is not relevant, this is just interesting. John Maynard Smith ने कहा कि why is it that we see sexual reproduction even though I just showed you कि asexually organisms ज़्यादा तेज़ी से फैलते हैं? Okay, good question.
you've shown me theoretically, but I can also prove this experimentally. So there are these snails called the New Zealand mud snails. Biologists are very weird people. Yes, the last week I was talking about poop and how it's really cool how the bacteria inside of it we don't understand. Today I'm talking about these biologists who actually went to New Zealand to these very beautiful lakes, and they decided कि हम क्या करेंगे, हम उसके अंदर से snails निकालेंगे in freezing water, by the way. They took these snails, और snail की खासियत ये है कि it can be sexual, but then if it gets a single mutation, it can also be asexual. When I say mutation, by the way, all I mean is कि I'm assuming कि आप लोगों को पता है कि हम सब के अंदर DNA है, जानवरों में DNA में जब change आ जाता है, वो अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है, randomly अगर होता है ये process, that's a mutation. Okay. These snails, they can reproduce sexually or they can reproduce asexually. अच्छा. अगर जॉन मेनार्ड स्मिथ की बात सच है, तो अगर मेरे पास 100 asexual snails हैं, sexual snails हैं, और उसमें मैं 10 asexual snails डाल दूँ उस लेट्स से कि मेरे पास एक माइक्रोकॉज़म है, उसके अंदर और कुछ आ जा नहीं सकता, सिर्फ snails हैं और snails जो हैं उनका खाना है, कोई पैरासाइट्स नहीं, कोई snails को खाने के लिए कोई और फैक्टर्स नहीं है. अगर जॉन मेनार्ड स्मिथ की बात सच है कि द कॉस्ट ऑफ सेक्स इज़ 2-fold, यानी कि 2 गुना ज़्यादा फ़ायदा है मुझे asexually रिप्रोड्यूस करने का, तो आई शुड सी अ डबलिंग ऑफ द asexual snails इन दिस सेक्शुअल पॉपुलेशन. 100 snails से शुरू किया जो कि सेक्शुअल है, उनमें 10 डाली, तो आई शुड सी के द 10 asexual snails वो डबल होती जाएँ. And so they did these experiments, and what they found was that John Maynard Smith was right. All other things being equal, the asexual snails, they actually increased in the population by twice as many every generation. Okay, so he was right. Sex is a problem. The males are a problem because the females can technically reproduce asexually if they want to, but sex still happens, and more commonly than we would expect. So why? Are you guys following this so far, by the way? Okay, brilliant. If you have any questions, you can interrupt me. Can we have the next slide, please? Okay. जी एक मसला है सेक्स का, मैंने आपको बताया कि महंगी है, टाइम लगता है, स्पेशलाइजेशन चाहिए, males are the problem, asexual reproduction is faster, but everyone still has sex, all animals still have sex. एक और मसला है सेक्स के साथ. आप फर्ज करें कि मैं कोई I'll talk about this slide. मैं कोई ताश की गेम खेल रहा हूँ and I have a winning combination of cards, and then the person deciding the rules tells me कि you know what, shuffle your cards with the deck. तुम्हारे पास अभी winning combination था, now you have to shuffle it with the deck and you get randomly allocated cards. That's not very advantageous for me, but that's technically what sex makes animals do. What do I mean by that? Does anyone know what this is? I've shown this in the last lecture, so maybe. Chromosomes? Okay. These are the human chromosomes. हमारे cells जब divide हो रहे होते हैं ना, तो फिर there is a time जब हमारा DNA इतने perfect और organized structures बनाता है कि हम chromosomes को actually देख सकते हैं. इंसानों में 23 chromosomes के pairs होते हैं. ये वाला आपको अपनी अम्मी से मिलेगा, ये वाला आपको अपने अब्बू से मिलेगा, ये वाला 2 का आपको अम्मी से मिलेगा, 2 का आपको अब्बू से मिलेगा, और X और Y हैं, तो if you're X or Y you're a male, if you're XX you're a female. Basic stuff. अच्छा, होता क्या है कि when you have to make sperm and when you have to make eggs, तो फिर you start as cells जिनके पास 2 chromosomes होते हैं, right? यानी कि ये आपको अब्बू से मिला ये वाला क्रोमोसोम, ये वाला अम्मी से, and this is true for all 23 chromosomes. मैं सिर्फ एक पेयर दिखा रहा हूँ. And then in order to make a sperm or an egg, you go through this process called meiosis. Meiosis है बस a specialized form of cell division, and you end up with sperm which has 1 chromosome of this kind and 1 chromosome of this kind. ये वाला came from the parent, from the male, and this one came from the female. Same thing for the
female part. When you're making eggs, you make half of your DNA. Okay, what that means is कि मेरे पास फॉर एग्ज़ाम्पल अगर बहुत अच्छा एक क्रोमोसोम है, लेट्स से इसको मैं कर्ली क्रोमोसोम कह दूँ, इसके अंदर एक ऐसी जीन है जो कि इस स्ट्रेट क्रोमोसोम के साथ बड़ा अच्छा काम करती है। या फिर फ़र्ज़ करें मेरे पास सिर्फ एक ये कर्ली क्रोमोसोम है जो कि ऑन इट्स ओन बड़ा अच्छा काम करता है। इट गिव्स मी अ सर्वाइवल एडवांटेज दैट नो अदर एनिमल हैज़। आई वुड टेक्निकली वांट कि मेरी जितनी भी पुश्त है उसको वो कर्ली क्रोमोसोम ही मिले। आई डोंट केयर व्हाट द मदर इज़ ब्रिंगिंग बिकॉज शी माइट नॉट हैव दैट कर्ली क्रोमोसोम जो कि मुझे एक सेक्शुअल एडवांटेज देता है, जो मुझे एक सर्वाइवल एडवांटेज देता है। बट व्हाट सेक्स इज़ फोर्सिंग मी टू डू द वे मियोसिस हैपन्स इज़ कि एक स्पर्म ने फ्यूज़ करना है विद ए मदर्स एग, सो व्हाट यू हैव अ प्रोसेस, आई हैव शोन दिस इन द लास्ट लेक्चर एज वेल, बट what you have is कि मेरे chromosomes, because I am the male, let's say, I have that curly chromosome, I'm making sperm जो कि curly है या जिसमें वो curly gene है, and I'm making sperm जिसमें वो सीधी gene है, and then the mother is just bringing me those straight, normal, wild chromosomes which don't have the advantage that I had. और अगर आप ये table बनाएं तो what you'll find is कि हम दोनों के जो बच्चे पैदा होंगे उसमें only 50% will actually have my good curly chromosome. The remaining 50% of my children don't have that curly chromosome जो कि जिसके अंदर वो जीन थी जो कि एडवांटेजेस थी जो कि उन्हें एक एवोल्यूशनरी फ़ायदा दे सकती थी। तो जस्ट बाय मेटिंग मेरा डीएनए जो कि लेट्स से कि बहुत अच्छा है वो डाइल्यूट हो गया। मेरे बच्चों में हो सकता है कि वो 50% जो मदर से आ रहा है वो डिसएडवांटेजेस है, बट आई एम स्टिल having sex, like organisms are still reproducing sexually. So that's another cost of sex. All I've done so far is talk to you about why sex is bad. I've just given you the problem. I haven't told you why it actually happens. Okay. And this, by the way, was Gregor Mendel. He discovered this law, which is called the law of Mendelian segregation. Next slide. Okay. This sounds complicated, okay? Looks complicated, but it's really not. You don't need to understand the math or the graphs. All I'm saying over here is कि अमूमन biologists पहले सोचते थे कि fine sex has costs, but उसका फ़ायदा ये है कि वो variation पैदा करता है. Yes, okay. Which is the point कि ठीक है मेरा कर्ली क्रोमोसोम जो है वो बड़ा फिट था, मगर ऑन अ स्पीशीज़ लेवल जब अलग अलग ऑर्गेनिजम्स एक दूसरे के साथ मेट कर रहे हैं तो फिर सेक्स रिजल्ट्स इन द नेक्स्ट जनरेशन being more varied in the kinds of chromosomes and the kinds of DNA combinations they have. But we actually did some math and we realized that that's not always true. So let's say कि एक population है, okay, उसके अंदर 3 किस्म के बच्चे हो सकते हैं या 3 किस्म के जानवर हो सकते हैं एक जनरेशन के। एक जिनके पास AA है, right? We remember those 2 chromosomes. small a is just कि मेरे पास दोनों chromosomes में small a की जीन है and let's say कि ये जीन height determine करती है। तो मेरे पास एक ऐसे बच्चे हैं जो कि AA हैं जो कि छोटे हैं हाइट में, एक ऐसे हैं जो कि कैपिटल ए हैं जो कि बड़े हैं हाइट में, और एक मेरे पास वो है जिसके पास एक जीन बड़े हाइट वाली है, एक जीन छोटे हाइट वाली है और वो नॉर्मल हाइट के होते हैं। तो यू हैव अ जनरेशन जिसमें कुछ लोग बहुत ऊंचे हैं, कुछ लोग बहुत छोटे हैं और कुछ लोग बीच में। एंड द वे लेट्स अज्यूम द वे सिलेक्शन इज़ वर्किंग इसके लेट्स से कि इस जनरेशन में शेर हैं बहुत ज़्यादा जो कि इस जनरेशन के जानवरों को खाते हैं, एंड इट्स ईजीएस्ट फॉर द लायंस टू ईट द इंटरमीडिएट एनिमल्स। वाई? बिकॉज if I'm very big, I can probably fight off a predator. If I'm very small, I can probably run or hide. But if I'm intermediate,
I have the least advantage. And this happens commonly. मैं आपको hypothetical situation बता रहा हूँ, but this happens in diseases, for example, sickle cell anemia वगैरह, which I can talk about, but that's not important. अच्छा, ये fitness curve. Let's imagine कि ये जो curve है, this is produced because of the lions eating the intermediate people, and इस पे सबसे ज़्यादा pressure पड़ रहा है. तो you have a situation जहाँ पे now in your population, the ones that survived are the good ones. They're the ones जो कि या तो छोटे हैं या फिर tall हैं और वो बच सकते हैं शेरों से, और जो बुरे वाले हैं, ए वाले जो intermediate हैं, वो कम हैं. तो होना तो ये चाहिए कि अगली generation में यही pattern बरकरार रहे, right? Because I want the species to survive. मगर अगर आपके पास sexual reproduction है तो ऐसा होता नहीं है. अगर आपके पास sexual reproduction है तो you actually, the way this works out is based on this equation. This equation has a 1 in the end, by the way. What that suggests is that it's talking about probability. जब किसी भी चीज़ की probability 100% या 1 है, it can't exceed that. It's called the Hardy-Weinberg equation. It's not important necessarily, but all it suggests is that if you have random sexual reproduction, तो you will get to this stage जहाँ पे ए जो बुरे वाले थे जिनको शेरों ने खा लिया, वो दोबारा से बढ़ गए आपकी population में. आपकी population में दोबारा से ऐसे जानवर आ गए हैं जो कि are not healthy enough to survive. Whereas if you had asexual, तो फिर आपकी वही ratios बरकरार रहते. So this is another criticism of sex. It sounds a lot like so far all I've told you is how sex is bad and you should never do it again. But there are reasons why sexual reproduction happens. Can we move on to the next slide? Okay, disadvantages of sex, I've talked about these. I'm not going to delve any more time on these. By the way, sexually transmitted diseases is another disadvantage, which happens in all organisms. Next slide. Okay, despite all of these issues, 1% of all animals, 1% जानवर सारे, they reproduce sexually, and 0.1% animals and 1% plants will reproduce sexually. Even bacteria sometimes do sexual reproduction. So it's quite common. And Darwin was very puzzled by the subject. This is a quote he gave in 1862. He didn't entirely understand why sex evolved. Can you go to the next slide? So I'll give you a traditional explanation for why for the longest time and from the late 1800s to late 1900s हमें क्यों लगता था कि sex is happening even though उसके इतनी ज़्यादा costs हैं. उसकी एक वजह ये है कि sex speeds up the rate at which advantageous mutations can accumulate. It speeds up the rate of evolution. What I mean by that is कि let's say कि मेरे पास एक asexual situation है जहाँ पे मेरे पास genes हैं A. एक मिनट में इसको मिटा भी दूँगा. Okay, there's gene A. और ये 3 अलग अलग जीन्स हैं जो कि जिनके बारे में मैं बात करूँगा. ये asexually reproduce कर रही है species, ये same species sexually reproduce कर रही है. Now let's imagine कि 3 जीन्स हैं A, B और C. जब वो इकट्ठे combination में आती हैं तो फिर that's great, you know, that is good for your survival. अगर आप asexually reproduce कर रहे हैं तो फिर मेरे पास जीन A है, I have to wait कि मेरे अंदर एक म्यूटेशन हो जो कि जीन B पैदा करे. And then that same organism has to wait, या its clone has to wait कि उसके अंदर एक और म्यूटेशन हो जो कि जीन C पैदा करे. We thought for the longest time कि this is going to take too long in asexual populations. Whereas if you're having sexual reproduction, तो जीन A मैं पैदा कर सकता हूँ, जीन B कोई और पैदा कर सकता है. And I can just, even though I don't have gene B, when we come together, we can produce a child that is AB. And then gene C similarly
मिल सकती है if A B mates with someone who carries C. The point that I'm making is कि sexual reproduction means कि मुझे सारी advantages mutations अकेले नहीं accumulate करनी पड़ रही. I can just pair my DNA with someone who has that advantage, and our children will have that advantageous mutation. So that's one reason why we thought कि sexual reproduction हो रही थी. Okay. Can you go to the next slide? अच्छा, एक और वजह, by the way, like I'm giving you these hypotheses. You might feel a little confused, even bored, but the reason you feel confused is because scientists are confused. We don't actually know why sex is happening or why it's as common as we see in the natural world. The best hypothesis we have is hypothesis number 2, which is the Red Queen hypothesis. Has anyone read Alice Through the Looking Glass? Alice in the Wonderland is inspired from that. Sorry? No, about it, I haven't read it. Yes, huh. I haven't either, by the way. I hate because a lot of the people that are doing this research are British. And so it was a British scientist who gave the Red Queen hypothesis based on that book. I don't like it. मुझे बहुत बुरी किताब लगती है. I've tried reading it. But हो ये रहा होता है उस किताब के अंदर कि Alice, who is our protagonist, she's running on a chessboard. And no matter how fast she runs, no matter how far she tries going, she stays in the same block, right? And the queen says कि no matter कि over here, you have to run very fast to stay at the same place. मुझे कभी कभार ये भी लगता है, I'll talk about this later, but biologists का hypothesis ये था कि देखें evolution ना सिर्फ एक organism की नहीं हो रही होती. हो क्या रहा होता है कि मैं organism हूँ, मुझे infect करने वाला कोई virus है और मैं हर वक्त evolve कर रहा हूँ, मगर मैं आगे नहीं बढ़ रहा क्योंकि मेरे साथ साथ वो virus भी evolve कर रहा है. तो हमारे बीच में एक evolutionary arms race हो रही है, which is basically कि I am developing stronger immunity to fight this virus, and this virus is developing stronger genes to overtake my immunity. And then what you have is a situation जिसके अंदर मैं asexually अगर reproduce कर रहा हूँ ना, फ़र्ज़ करें कि मेरे पास एक जीन है, जीन नंबर A, which gives me immunity against virus A. But then virus A evolves into virus B. अगर हम asexually reproduce कर रहे हैं तो मेरे इर्द गिर्द जितने भी जानवर हैं जो कि मेरी पुश्त हैं या फिर मेरे siblings हैं, उनके पास भी जीन A है because we're clones of each other. इसका मतलब है कि जब वायरस B हमारे पास आएगा तो फिर वो हम सबको मार सकता है because it just evolved a new weapon in the infection, in the race, which can defeat my current DNA. But अगर मैं sexually reproduce कर रहा हूँ तो मेरे पास जीन A है, मेरी जो significant other है उनके पास जीन B है, let's say, and when we come together, we can produce different children, some of which are A, some of which are B. So the virus, which is B, will kill the B children, but it won't kill the A children. Okay? So that's the Red Queen hypothesis. The Red Queen hypothesis is simply the fact कि sexual reproduction की वजह से आपको एक advantage मिलता है सिर्फ तब जब parasites come into the picture. I sometimes think about the Red Queen as, you know, like you're stuck in the same position even though you're moving very fast. When I was doing this research, I thought that that's a lot like Pakistani politics. Zardari was president in 2008 and he's still president. By the way, no political comments like on whether or not that's a good or bad thing. But I just thought that was interesting. And right, so Red Queen hypothesis. That's the best theory we have for sex and why it happens. And it's still not a very good one. Can we have the next? Okay. I'll give you some experimental evidence of the Red Queen hypothesis. ये जो snail जिसके बारे में मैंने आपको बताया था ना, ये न्यूजीलैंड में इसका एक पैरासाइट भी है जो कि बिल्कुल उस वायरस की तरह इसको इन्फेक्ट करता है. That parasite is a worm.
और जो मैंने आपको एक्सपेरिमेंट्स बताए थे ना जिनमें ये जब आप asexual snails को डालें in a sexual population तो the asexuals increase in frequency. When that parasite comes into the picture, when that worm comes into the picture, तो फिर that idea goes away. When the parasite is present, so the asexual snails die off very quickly, and the only ones that remain are sexual. And so this is experimental confirmation of the Red Queen hypothesis. Magar, this isn't perfect, because even though snails के लिए the Red Queen hypothesis might be true, there are organisms जो कि asexually reproduce करते रहे हैं सदियों से. तो, you know, it's an exception. If we go to the next slide, I'll talk about one such organism. This is Deloid rotifers. अगर आप कभी moss या घास आपको नज़र आए ना आसपास इस्लामाबाद में काफ़ी ज़्यादा moss है by the way दरख्तों के ऊपर. If you're ever on a hike, what you can do is you can collect that moss and you can look at it under a microscope. You don't need a microscope by the way. अगर आप laser pen का जो वो lens नहीं होता उसको अपने फ़ोन के कैमरा के आगे लगाएं तो फिर you can see these animals. The Deloid rotifer has been reproducing asexually for most of its evolutionary history that we know of. हमारे पास जो fossils हैं उसमें भी हमें asexual नज़र आता है. And there are many animals like the Deloid rotifer जो asexually reproduce करते हैं और इनको parasites भी infect करते हैं. Yes. All these examples you've given of asexual reproduction, animals are generally simpler forms of life. Are there any complex, like mammals, for example, that produce asexually? There are no mammals, but there are sharks that have been known to be parthenogenetic, which is give virgin birth and be clones of each other. Mammals में complication इसलिए भी आ जाती है because one thing is why sex evolved in the first ancestral organism. We think कि जो सबसे पहला eukaryotic organism था 1.6 billion years ago, वो भी sexually reproduce करता था. This is based on fossil evidence and also on comparisons of DNA. मगर why don't you have any mammals that reproduce asexually? Is probably the fact that mammals is that one lineage जिसने कहा कि sex is a good idea, we'll just invest in it. And so they kept building more and more genes and systems which were reliant on sex. What I mean by that is that all mammals, उनमें जो embryo formation है, अब उनका process पक्का हो चुका है कि for the embryo to form in the mother's womb, it needs the father's genes to turn on at a certain time and the mother's genes to turn on at a certain time. If you don't have the father's genes, if you had 2 copies of the mother's genes, it won't develop properly. So we think what happened in mammals is that sex evolved in the first unicellular organisms, and then mammals decided that this is a good strategy, we will build on this. So mammals में sexual reproduction, अब हम वापस नहीं जा सकते to the drawing board. The size of the gene pool also determines how viable the species is. So in humans, there are populations which interbreed, and they are known to have died out. Now, an example of that are the Zoroastrians, the Parsis, whose numbers have dwindled over time. And that's because they entirely stay amongst themselves. Yeah. Okay. What is your view on cousin marriages? Yeah, ये lecture वैसे काफ़ी लंबा हो गया. I was hoping कि as a consequence of this lecture we could talk about these issues. I think it's a bad idea, guys. Like, and I have reason for this. This is not a moral question for me. This is a scientific one. It is very easy to follow कि जब आप cousin marriages करते हैं तो जो gene pool है वो limit होता जाता है. मैंने बताया ना कि one reason why sex exists is the variation it creates. जब आप interbreed कर रहे हैं with people जो आपसे genetically similar हैं, तो फिर you are restricting the variation. जो आपको sex ने इतना बड़ा फ़ायदा दिया वो आप minimize कर रहे हैं. And that happens as a consequence of cousin marriages. It's very well known in the biology world that interbreeding is bad for you. There was a royal family which interbred for a very long time in England.
and biologists traced the sort of diseases that they had. Pakistan mein we have a higher rate of developmental disorders based on cousin marriages as well. So there's scientific reasons to avoid it. I think this is also true of Pakistanis in Britain, whereas there is a lot of cousin marriage. Interesting, yeah. I'm sure, I think it's very common in Pakistan. But let's not forget it was also very common in Britain. Darwin, by the way, he married his cousin, which is funny because he was the guy who proposed evolution and then variation and then natural selection. So yeah, I think it's a cultural issue primarily, which has scientific and physiological consequences. And we should probably be talking more about it if we can avoid it. Okay, I'll go to the next slide. So, I have a summary of why sex happens. While I was writing this, I wrote like, अच्छा हाँ ठीक है, variation पैदा हो रही है, there are hypotheses. But all I want to do now, really, when I was preparing this lecture in the end, is tell you, okay, guys, we don't know. Like, genuinely, there are controversial opinions and there are hypotheses that we've thrown out, but our experiments don't fit the models and the hypotheses we have for why sex developed. I want to talk about why sex is important to know about, why the biology of sex is important to know about, because you guys must have had this feeling when you look at someone and you're attracted to them, or for whatever reason you feel butterflies in your stomach. So if you want, you can raise your hands if you're comfortable answering if that's happened to you. Okay? We've all had butterflies in our stomach. Neuroscience mein, this is a very well-known response. It's called vasopressin response. It's a hormone that's produced by your body, and it's evolutionarily conserved. So jo feeling aapko apni body mein hoti hai, wo bhainson ko bhi hoti hai, by the way, when they look at someone they're attracted to. And it's a mechanism that is evolutionarily conserved to tell you who is an attractive mate and who isn't. And so when you're living your lives, just be curious about what responses you have that are biological versus what are conscious. Yes? Can you shed some light on homosexuality in that regard? Because in that way there is no reproduction happening, but you can still have the feelings. Yeah, I mean, that's another mystery, is why if we evolve to have male and female counterparts, so why is it that homosexuality happens? Acha, homosexuality doesn't just happen in humans. Yeah, It also, it happens. yeah. In fact, like homosexuality ke alawa, there are cases of elephants that will try to mate with rhinoceroses. This doesn't happen normally in elephant society, but sometimes when that elephant is kept out of society for a long time. It's been, what I know of, homosexuality has been seen in chimps, it's been seen in fruit flies, it's been seen in some bird species. So yeah, question is why? क्योंकि homosexuality का तो कोई फ़ायदा नहीं है. एक hypothesis है जो अभी तक prove नहीं किया गया. This is a person based in the UK, I think King's College में he was doing his research and now he's in Paris. He suggested that one reason why homosexuality exists is that even though person A is homosexual, person B, who shares the same gene, because they're siblings, वो आपस में बहन भाई हैं, तो let's say कि जो भाई है या जो male fly है वो homosexual है, उसके कभी बच्चे नहीं पैदा होंगे, but B, उसकी जो sibling है वो hypersexual है, so she has a higher chance of producing children because she displays secondary characteristics. Yeah, she goes out and seeks more mates, or maybe she just has a higher probability of having twins, let's say. Yani कि एक ही go में you can have more than one child. So that's a theory for why homosexuality still exists in animals, even though उसका कोई direct advantage हमें नज़र नहीं आता. अच्छा, can we go to the next slide? नहीं, इससे पहले वाली. In fact, okay. I said initially that I'm a bioengineer, and one reason I'm interested in sex is
I want to engineer it. This sounds very sort of Frankenstein. I'll tell you what it is. मैं मच्छरों की बात कर रहा हूँ, by the way. So my day job, apart from what I'm doing right now, is I try to engineer mosquitoes की genes ताकि वो malaria ना फैला सकें. One thing you can do is, मच्छरों में भी by the way we have an X chromosome and a Y chromosome. अगर आप XY हैं तो आप मेल हैं, अगर आप XX हैं तो फिर आप फीमेल हैं. तो we in my lab and other people have developed a system जिसमें कि, does anyone know about CRISPR-Cas9 by the way? I talked about it in the previous lecture. Okay, so you know about it. Okay. मैं बहुत जल्दी से बताता हूँ आपको. DNA is DNA. DNA makes proteins. The reason हमारा DNA बताता है कि हमारे खदोखाल क्या होंगे is because हमारा DNA वो proteins बनाता है जो कि हमारे बाल, हमारी आंखें, हमारी हाइट वगैरह डिटरमिन करते हैं. एक प्रोटीन जो कि DNA बनाता है is Cas9. Cas9 is basically best thought of as a scissor. That doesn't look like a scissor, does it? It does? Okay, this is a scissor and it can cut DNA at any position I tell it to. But this is a protein, which means कि मैं इसको एक DNA sequence में डाल सकता हूँ, एक gene में डाल सकता हूँ. इसका मतलब ये है कि I can produce a situation जहाँ पे मेरे पास एक मच्छर है, उस मच्छर का जो Y क्रोमोसोम है ना, जो मेल्स डिटरमिन करता है, I'll just call it the Y for now. Let's imagine कि ये Y क्रोमोसोम का DNA है by the way. उसके अंदर मैंने Cas9 की जीन डाल दी हुई है और वो जीन क्या करती है, वो उसको जहाँ पे भी X क्रोमोसोम नज़र आ जाता है ना, जो कि फीमेल्स से आता है, वो उसको तबाह कर देता है, उसको काट देता है बहुत ज़्यादा पीसेस में. तो व्हाट यू हैव इज़ अ सिचुएशन कि इस मच्छर के जितने भी सेल्स होंगे उसमें जब X मौजूद होगा, Y क्रोमोसोम के अंदर जो Cas9 है वो X क्रोमोसोम को कट करेगा और X क्रोमोसोम तहस नहस हो जाएगा. आपके पास जो स्पर्म रहेगा मच्छर के अंदर वो सिर्फ Y क्रोमोसोम वाला स्पर्म है. Do you guys follow that so far? Kinda? Okay, we can have questions about this later on. And what that means is कि ये मच्छर सिर्फ Y bearing sperm बना रहा है. इसका ये, और हमें ये पता है कि जो X क्रोमोसोम है वो मदर से आएगा. इसका ये मतलब है कि जब ये मदर का एग जिसमें X क्रोमोसोम है, क्योंकि मदर इज XX, she never makes any Y eggs, the only children you will have will be male children. They will be XY. So basically genetic engineering से हम populations में एक ऐसा सिस्टम डाल सकते हैं जिसमें कि सिर्फ Y क्रोमोसोम पैदा होता है. Yes. So repeat it. Malaria की slide आई थी, that's why I was asking कि Anopheles female से वो. Yes. Okay, that's the reason. So मलेरिया फैलता किस तरह है? मलेरिया इस तरह फैलता है कि जो फीमेल मस्कीटो है वो उसने जब अंडे बनाने के लिए उसे खून चाहिए, तो वो कहती है वो आपका खून लेगी, तो इट एक्चुअली बाइट्स यू ताकि वो आपसे खून ले सके और उस खून के अंदर जो प्रोटीन्स हैं उससे वो अंडे बनाती है. इसका ये मतलब है कि मलेरिया जो कि उस बाइट की वजह से फैलता है वो सिर्फ फीमेल मच्छर फैलाती है, मेल मच्छर नहीं फैला सकता. तो व्हाट वी आर ट्राइंग टू मेक इज़ अ सिस्टम जिसमें कि सिर्फ मेल मच्छर पैदा होते हैं, क्योंकि हमने X क्रोमोसोम को तबाह कर दिया Cas9 के साथ. एंड वी आर टेस्टिंग दिस इन द लैब. तो दिस इज़ व्हाई आई एम इंटरेस्टेड इन दिस रिसर्च. यस. अस्सलाम वालेकुम सर. तो इससे ये नहीं होगा कि आप उसमें सिर्फ मेल्स बच जाएंगे एंड जो हमारे पास फीमेल्स होंगी वो एलिमिनेट हो जाएंगी? इवेंचुअली आप उसकी पूरी जनरेशन को ख़त्म कर देंगे क्योंकि मेल्स ही मेल्स होंगे, एंड देन उससे इकोसिस्टम डिस्टर्ब होगा, क्योंकि इकोसिस्टम की तो बिल्डिंग ब्लॉक है वो स्पैरोज उसको ईट करेंगी. देन हम आगे जो भी पैरामिड बनता है उसके सिस्टम में चलेंगे. तो व्हाट यू आर डूइंग, यू आर जस्ट एलिमिनेटिंग फीमेल्स, देन ओनली जो मेल बच जाएंगे एंड देन फिर वो ब्रीड नहीं कर सकेंगे एक दूसरे के साथ. then ये इकोसिस्टम पे इफेक्ट तो करेगा? Yes. Answer to your question is yes. But essentially हाँ, अच्छा सवाल है और असर भी अच्छा है, क्योंकि हम चाहते हैं कि सारे मच्छर ख़त्म हो जाएं.
बाय द वे जब हम इंसेक्टिसाइड इस्तेमाल करते हैं तो हम यूजुअली मोर देन वन मस्कीटो स्पीशीज़ को कत्ल कर रहे होते हैं. इस टेक्नोलॉजी के ज़रिए मैं सिर्फ एक स्पीशीज़ में कत्ल कर सकता हूँ, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी मेटिंग से फैलती है और स्पीशीज़ की डेफिनेशन ही है वो जो अपने साथ मेट कर सके. मच्छरों की तकरीबन 3000 स्पीशीज़ है, मगर तकरीबन 30 स्पीशीज़ मलेरिया फैलाती हैं. और हमारा हाइपोथेसिस ये है कि बेशक वो जो 30 स्पीशीज़ हैं वो इकोसिस्टम से तबाह हो भी जाएं, इकोसिस्टम पे बहुत बड़ा असर नहीं होगा, मगर नेवर से नेवर, राइट, क्योंकि देयर आर इकोलॉजिस्ट्स वर्किंग ऑन द आइडिया कि अगर वो 30 स्पीशीज़ तबाह हो जाए एकदम से, दे गो अवे, तो फिर बाकी इकोसिस्टम पे क्या असर पड़ेगा. तो या इट्स अ गुड क्वेश्चन. मच्छर का फ़ायदा क्या हो सकता है? अदर ऑर्गेनिजम्स ईट इट, तो छिपकलियाँ खाती हैं बाय द वे. एंड हम ना इकोलॉजी में हम बात करते हैं बायोमास की, और मच्छर जो है क्योंकि बहुत ज़्यादा होते हैं किसी भी इन्वायरमेंट में, एक मच्छर का मास बहुत ज़्यादा नहीं है, बट इफ़ यू टेक ऑल द मस्कीटोज़ जो कि एक स्पेस में मौजूद हैं, दैट्स अ लॉट ऑफ मास, दैट्स अ लॉट ऑफ कार्बन जो कि आप उस इकोसिस्टम में से रिमूव कर रहे हैं. तो एंड दैट कार्बन इज़ अ सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर प्रेडिटर्स, बट ऑल्सो जब वो मच्छर मरता है तो वो जो नाइट्रोजन है वो डिग्रेड होता है, जब वो नाइट्रोजन पौधे इस्तेमाल करते हैं वगैरह, एंड इकोसिस्टम सिक्लिकल होते हैं. तो या सर, आप उस फीमेल मॉस्कीटोज़ को ख़त्म करने के बजाय उस फीमेल मॉस्कीटो के अंदर ही उसकी जीन में मैनिपुलेशन करके वो जिस वजह से वो मलेरिया काज करता है उसको ख़त्म करने का नहीं सोचें. I have a slide on this. Do we have? Hold on. Okay, I can describe this to you. Okay. अच्छा, आपका सवाल ये था कि बजाय कि मैं मच्छर को कत्ल कर दूं, कत्ल तो खैर इज़ अ कॉम्प्लिकेटेड वर्ड, बजाय कि मैं मच्छर को ख़त्म कर दूं, क्यों ना मैं ऐसा मच्छर बनाऊं जो कि मलेरिया जिसको हो ही ना सके. ये वी आर वर्किंग ऑन दिस. प्लाज्मोडियम, हाँ. तो आखिरी स्लाइड पे हम जा सकते हैं, ये इसके बाद वाली जो है. ओके, द वे दिस वर्क्स इज़ के मलेरिया के जो सिम्टम्स हैं वो आप में पैदा करता है प्लाज्मोडियम, जो कि एक छोटा सा माइक्रोस्कोपिक क्रीचर है. ये भी बाय द वे इसके मेल और फीमेल्स होते हैं और ये सेक्सुअली डिवाइड करता है. आई कम टू व्हाई दैट्स इम्पोर्टेंट. और होता क्या है कि इस प्लाज्मोडियम के 2 स्टेजेस हैं. इसकी एक लाइफ साइकिल होती है. एक लाइफ साइकिल इसकी मच्छर में होती है, और बाय द वे जब ये मच्छर के पेट के अंदर होता है तब द मेल प्लाज्मोडियम हैज़ टू फाइंड द फीमेल प्लाज्मोडियम एंड फर्टिलाइज इट. एंड वी डोंट अंडरस्टैंड हाउ इट डज़ दैट. हमें लगता है कि कोई केमिकल परफ्यूम है जो कि फ़ीमेल एक ही जगह पे खड़ी हुई है और वो कोई सिग्नल दे रही है केमिकल जो कि मेल आइडेंटिफाई करके उस तक पहुंच रहा है. द वर्क आई एम डूइंग नाउ, उसमें मैं ये फिगर आउट करना चाह रहा हूँ कि वो सिग्नल क्या है, क्योंकि अगर मुझे पता लग जाए कि वो सिग्नल क्या है तो मैं इस मच्छर में एक ऐसा सिस्टम डाल सकता हूँ कि जब वो पैरासाइट फीमेल वाली एक ये सिग्नल पैदा कर रही है तो वो मच्छर मर जाए, मगर अगर वो सिग्नल मौजूद नहीं है तो फिर वो मच्छर ना मरे. तो दैट्स अ वे ऑफ मेकिंग श्योर कि ओनली द मस्कीटोज़ जिनमें मलेरिया है वो मरते हैं, मगर जो बाकी मस्कीटोज़ हैं जो कि हमें इकोसिस्टम के लिए चाहिए तो नहीं, बट ज़रूरी हो सकते हैं, वो ना मरे. तो द रीज़न आई एम गिविंग यू अ लेक्चर ऑन द एवोल्यूशन ऑफ सेक्स, फॉर मी द सेल्फिश रीज़न इज़ कि आई एम एक्चुअली इंटरेस्टेड इन द सेक्स ऑफ प्लाज्मोडियम. तो एक ये तरीका है कि आप जो सिस्टम मैंने डिस्क्राइब किया. एक तरीका ये कि हम ना जब हमें मलेरिया होता है, हम मलेरिया के ख़िलाफ़ एंटीबॉडीज़ भी बनाते हैं, और क्यों ना वही एंटीबॉडीज़ हम मच्छर के अंदर डाल दें. उसका मसला वही है जो रेड क्वीन हाइपोथेसिस का मसला है कि अगर मैं इवॉल्व कर जाऊँगा, आई विल हैव अ जीन दैट डिफेंड्स मी अगेंस्ट मलेरिया ए, मगर मलेरिया भी इवॉल्व करेगा तो वो जो इम्यूनिटी की जीन्स, जो एंटीबॉडी जीन्स मैंने पहले डाली थी, वो मलेरिया पैरासाइट उनको बाईपास कर सकता है. इट कैन इवॉल्व अगैन एंड अगैन. तो या इट्स अ कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम. ओके, does anyone else have? Yes, okay. Assalamualaikum,
सर क्वेश्चन ये है कि मतलब कि फ़ीमेल मॉस्किटो तो हम लोगों को काट लेते हैं ना, लेकिन ये हमारी बॉडी में ऐसा क्या मतलब कि छोड़ जाता है कि हम लोगों को मतलब कि बहुत ज़्यादा ख़ारिश होती है और हम लोग बीमार हो जाते हैं इससे? या गुड क्वेश्चन। अच्छा, ख़ारिश क्यों होती है? बीमार बहुत ज़्यादा मतलब कि हो जाते हैं ना, ये सब क्या, ये हम लोगों से तो मतलब कि ब्लड तो ले लेता है, लेकिन क्या कर लेता है कि हम लोग बीमार हो जाते हैं? हाँ, फिर चोटता क्या है? या अच्छा, द मस्कीटो इंजेक्ट सलाइवा इनसाइड ऑफ यू, यानी कि मच्छर सलाइवा पैदा करता है और वो आपके अंदर पहले इंजेक्ट करता है, और वो इसलिए करता है ताकि आपका जो ब्लड है वो क्लॉट ना करे। क्योंकि अगर आप एक फ़ीमेल मस्कीटो हैं, आप चाहते हैं कि खून की रवानी बरकरार रहे और वो ज़्यादा सारा खून जो आप में है वो रवां होके मच्छर तक पहुंच जाए। तो बिफोर इट एक्चुअली सक्स योर ब्लड, इट एक्चुअली इंजेक्ट सलाइवा इनसाइड ऑफ यू, और वो सलाइवा के अंदर एंटी कोआगुलेंट्स और ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जो ब्लड को क्लॉट होने से रोकते हैं। अच्छा, इट ऑल्सो इंजेक्ट्स समथिंग सिमिलर टू अ पेन किलर। इसका मतलब है कि जब वो सुई मच्छर की आपकी स्किन में जाती है तो फिर आपको दर्द इमीडिएटली नहीं होता। इनफैक्ट बाय द टाइम you've noticed कि मच्छर ने आपको बाइट कर लिया है, अगर आपको नज़र नहीं आ रहा, बाय द टाइम you've noticed मच्छर ने खून पी भी लिया होता है, बिकॉज इट्स अ काइंड ऑफ एनेस्थीसिया जो वो आप में इंजेक्ट कर रहा है साथ में। अच्छा, अब ख़ारिश क्यों होती है और लाल क्यों हो जाता है वो एरिया? या ये बहुत वेल नोन ना, इट्स एन इम्यून रिस्पॉन्स। तो जब भी आपकी बॉडी के अंदर कोई भी फॉरेन पार्टिकल आता है तो आपकी बॉडी उसके ख़िलाफ़ इम्यून रिस्पॉन्स पैदा करती है बाय सेंसिंग कि ये सिग्नल, ये जो केमिकल है ये मेरा हिस्सा नहीं है, किसी और का हिस्सा है। और फिर उस रिस्पॉन्स में क्या क्या होता है, एक रिस्पॉन्स है कि वहाँ पे जो खून है ना उसकी रवानी बढ़ जाती है, वो डायलेट हो जाती हैं वो वेसल्स, तो दैट्स वाई इट गेट्स रेड। इट ऑल्सो गेट्स इची फॉर द सेम रीज़न, एंड देन ऑल्सो द जो आपकी बॉडी के इम्यून सेल्स हैं वो उधर इकट्ठे हो जाते हैं उस पार्ट पे। वी वर वेरी इंटरेस्टेड इन दिस क्योंकि हमने सोचा, अच्छा वैक्सीन आप सब ने होपफुली कोविड की वैक्सीन लगाई है, ओके? आर यू हैव अ क्वेश्चन और डू यू, ओके, आपने लगाई है कोविड की वैक्सीन? ओके, दैट्स गुड, दैट्स गुड। जब आपको वैक्सीन लगती है ना, हम चाहते हैं कि आपका इम्यून रिस्पॉन्स हो, हम चाहते हैं कि आपको थोड़ा सा ना आपकी बॉडी को पता लगे कि फॉरेन एजेंट आए हैं आपके अंदर, क्योंकि जितना बड़ा आपका इम्यून रिस्पॉन्स होगा जब वैक्सीन लगेगी उतना अच्छा आपको इम्यूनिटी मिलेगी, उतनी अच्छी इम्यूनिटी मिलेगी अगेंस्ट कोविड। तो वी एक्चुअली हैव अ प्रोजेक्ट जिसमें हम वो जो वैक्सीन का प्रोटीन है वो हमने मच्छरों में डाला हुआ है, एंड द आइडिया इज़ कि वो मच्छर आपको बाइट करेगा और वो आपको वैक्सीनेट भी करेगा और फिर आपका एक इम्यून रिस्पॉन्स भी पैदा होगा, क्योंकि मच्छर जब काटते तो इम्यून रिस्पॉन्स बहुत ज़्यादा होता है कंपेयर टू जस्ट अ नीडल। या इट्स अर्ली स्टेजेस में ये प्रोजेक्ट है, बट and if it bits us, wouldn't it the COVID vaccine be ineffective in our bodies then? Then that's the same problem again. हाँ, तो आप योर क्वेश्चन इज़ कि हम अगर मस्कीटो में वो कोविड वैक्सीन डालें और फिर वो आपको बाइट करे तो फिर कोविड भी तो इवॉल्व हो सकता है उस वैक्सीन के ख़िलाफ़, ये आपका क्वेश्चन? ओके, यस। एक क्लैरिफिकेशन तो ये है कि वो हम मच्छर रिलीज़ नहीं कर रहे एनवायरनमेंट में, हम बेसिकली इट्स गोइंग टू बी अ कप जो कि हमने रखा हुआ है, हम एंड इट्स वी आर गोइंग टू विच हैज़ द मस्कीटोज़ इनसाइड ऑफ इट, and the mosquitoes are going to bite you and then we'll take the mosquitoes back. सवाल आपका ये कि कोविड क्यों इवॉल्व नहीं हो सकता वैक्सीन के ख़िलाफ़? होता है, it happens, which is why you should get booster vaccines. Yeah, so Omicron variant for example, there's research showing कि the Omicron variant, अब तो खैर पुराना हो गया, अब तो नए variants आ गए, is less effective against the previous vaccines. अच्छा, ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, सेक्स से हम थोड़ा दूर जा रहे हैं, बट ये कि अगर कोविड इवॉल्व करता रहता है तो फिर हम सब अभी तक ज़िंदा क्यों हैं? हम सब ने वैक्सीनेशन कराई है। हाँ, डज एनीवन हैव रिस्पॉन्स टू दिस? और हम भी इवॉल्व करते रहते हैं। Initially, COVID wasn't that deadly, as in like not everyone was dying. The death rate was around 2 to 3%. Okay, interesting. I don't think it was anyways going to wipe out the entire human species. Yeah, but it's not as big a problem now, right? Also, After.
after the vaccination, I guess most people have developed immunity. Oh, हाँ, sorry. So after the vaccination, I feel like more immunity has been developed in the human population compared to before the vaccination. Yeah, so you're right. Like there are a higher number of people जिनको कोविड इन्फेक्ट नहीं करता बिकॉज ऑफ द वैक्सीनेशन, या अगर करता है तो फिर देयर इम्यून सिस्टम कैन कॉम्बैट इट. बट एक वजह इसकी प्राइमरीली ये है कि हमने कोविड की जो ट्रांसमिशन साइकिल है ना, वो हमने वैक्सीनेशन की वजह से रोक दिया है. व्हाट दैट मीन्स इज़ कि द कोविड वायरस कैन स्टिल इवॉल्व, मगर अगर आपके पास एक छोटी पॉपुलेशन है ना ऑफ एनिमल्स और वायरसेस, तो उसमें वेरिएशन इस किस्म की आना कि वो सक्सेसफुल हो जाए उसके चांसेस कम है. उसकी वजह यह है कि जब चीज़ें छोटी हो जाती हैं इन नंबर्स तो रैंडमनेस बढ़ जाती है. मसलन जब आप लूडो खेल रहे हैं, अगर आप 10 दफ़ा वो डाइस को घुमाएंगे तो हो सकता है कि 4 दफ़ा 6 भी आ जाए, यू नो. मगर अगर आप 100 दफ़ा उस डाइस को करेंगे एंड यू गेट लाइक 90% 6, तो फिर दैट्स अनलाइकली. तो द लॉ ऑफ लार्ज नंबर्स कंपेयर टू द लॉ ऑफ स्मॉल नंबर्स. जब हम वैक्सीनेशन करते हैं तो अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ दैट इज़ के वायरस का जीन पूल और द नंबर ऑफ वायरस पार्टिकल्स जो पॉपुलेशन में है वो कम हो जाते हैं, विच मीन्स के अब उसमें वेरिएशन कम है एंड देयर आर लेस चांसेस कि वो इवॉल्व करके कोई सक्सेसफुल वायरस पार्टिकल बनाएगा जो कि आपकी वैक्सीन को काउंटरैक्ट कर सके. इफ दैट मेक्स सेंस. हमने ट्रांसमिशन साइकिल उसका तोड़ दिया. जस्ट वन. या okay. Do you guys have any clarifications by the way about sexual evolution वाला part जो मैंने किया था, because I'm not sure if everyone understood it well enough. So you can ask a question, यानी कि I'm not the best teacher. तो ये क्वेश्चन है कि जिस तरह सवाल भी रेज़ हुआ था कि जो कज़न मैरिजेस हैं उससे ये होता है कि जो जीन पॉपुलेशन है वो रिस्ट्रिक्ट हो जाती है, राइट. अभी इस तरह हमें एक इस तरह कंसेप्ट है फैमिली बैलेंसिंग का जिसमें जीन सिलेक्शन होती है. तो क्या नियर फ्यूचर वो भी हम उसे भी कज़न मैरिजेस के साथ इक्वल कर सकेंगे, या उसका सेक्स एवोल्यूशन के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इकोसिस्टम के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हम एक तरह से ख़ुद अपनी मर्ज़ी की तहत ही जो कर रहे हैं नेचर के अगेंस्ट, या जो भी इस तरह कहें, मतलब कि उसमें एक बंदे की विल शामिल हो जाती है. क्या उसका भी सेक्स एवोल्यूशन के ऊपर कोई फ़र्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? आपका मतलब ये कि फैमिली प्लानिंग जब हम कहते हैं वी चूज़ नॉट टू हैव चिल्ड्रन और नहीं, जो मतलब कि बाय चॉइस मेरे ख्याल से एक मेल है या फीमेल है, जो इस तरह का कॉन्सेप्ट है. या हाँ, ओके. अगर मैं आपका सवाल सही तरह समझा हूँ, यू कैन क्लैरिफाई. करें कि एक फैमिली है, उसके 5 बेटे हैं, 1 बेटी है, वो नेचुरल प्रोसेस है. और अगर मैं शादी करता हूँ तो मैं बाय चॉइस 2 बेटे लेता हूँ और 1 बेटी लेता हूँ. जीन सिलेक्शन, ये जो सेक्स सिलेक्शन है, मैं इस लिहाज से बात कर रहा हूँ. या ठीक है, ओके. अच्छा, सेक्स सिलेक्शन ह्यूमंस में हो सकती है बाय द वे, एंड वी लास्ट लेक्चर में ये बात हुई थी. देयर इज़ अ केस दैट्स ऑन गोइंग जहाँ पे without talking too much about it, क्योंकि I think it's still anonymous, मगर there was a case जहाँ पे the family wanted कि ये जो लड़की है इसका बच्चा जो है वो मेल हो, and she went through an IVF procedure. अच्छा, IVF by the way उसमें उसको कहते हैं in vitro fertilization. और IVF में होता क्या है कि if you're a female, if you're a woman, तो आपको वो हार्मोन्स देंगे जिसके ज़रिए आप ओव्यूलेट करेंगे एंड आप यू विल हैव योर नॉर्मल पीरियड्स एंड यू विल प्रोड्यूस एग्स. और वो एग्स एक्सट्रैक्ट करेंगे और उसके अंदर फिर वो स्पर्म इंजेक्ट कर सकते हैं डायरेक्टली, और वो स्पर्म जो है आप चूज़ कर सकते हैं कि उसकी क्या DNA होगा, राइट. तो वेरी सिंपली पुट दैट इज़ IVF, जब आप आर्टिफिशियली इंसेमिनेट करते हैं एक एग को. ये बाय द वे बहुत रिमार्केबल टेक्नोलॉजी और रेवोल्यूशनरी है, क्योंकि कई लोग जो बच्चे चाहते हैं और उनके नहीं हो सकते वो IVF यूज़ करते हैं. एंड ऑल्सो अगर आपको कोई जेनेटिक कंडीशन है, राइट, तो फिर वो आप IVF के ज़रिए अपने बच्चों में अवॉइड कर सकते हैं. तो एक तो ये बात, मगर क्योंकि हमारे पास अब ये सलाहियत है कि हम
जेनेटिक इंजीनियरिंग भी कर सकते हैं, तो फिर इसका ये मतलब है कि हम सेक्स सेलेक्ट कर सकते हैं, बिल्कुल जिस तरह मैं अपने मच्छरों की सेक्स सेलेक्ट कर रहा था विद एक्स वाई. आई कैन डिसाइड कि कौन से स्पर्म है जिनमें वाई क्रोमोसोम है, एंड आई कैन मेक श्योर कि दे आर द ओनली वंस दैट फर्टिलाइज द एग. या फिर मैं ये कर सकता हूँ कि फर्टिलाइजेशन के बाद, क्योंकि जब वो IVF करते हैं तो 4-5 अंडे होते हैं जो फर्टिलाइज होते हैं, बल्कि यूजुअली मोर देन दैट. एंड आई कैन पिक कि इनमें मेल कौन है, फीमेल कौन है. फीमेल वालों को आप मार दें, मेल वालों को आप ज़िंदा रखें. जब मैं मारने की बात कर रहा हूँ, मैं इंसानों को मारने की बात नहीं कर रहा. इट्स जस्ट एग्स. एट दिस पॉइंट देयर ओनली 4-5 सेल्स. तो या ये है इसका दैट इज़ द टेक्निकल पॉइंट कि किस तरह होती है. विल इट हैव अ कॉन्सिक्वेंस ऑन एवोल्यूशन? मुझे नहीं लगता, क्योंकि अनलेस हम कोई बहुत लार्ज पॉपुलेशन लेवल पे चेंजेस ला रहे हैं, इंडिविजुअली जो इंसान फैसला करता है ना, वो एवोल्यूशनरी टाइम स्केल पे यूजुअली उसकी इतनी बड़ी implications नहीं होती, unless you are talking about very powerful technologies like gene drive, which I work on. मगर हाँ, अगर एक इंडिविजुअल फैमिली फैसला कर रही है कि हमें ज़्यादा लड़के चाहिए, तो इट मे नॉट हैव दोज कॉन्सिक्वेंसेस. मगर एक कैवियाट इसमें यह है कि आई थिंक चाइना में देयर वर केसेस ऑफ फीमेल इन्फेंटिसाइड, कि जो लड़कियां थीं उनको पैदाइश के बाद ही मार दिया जाता था, 50s and 70s. एंड एट द टाइम जो सेंसस हुआ था चाइना का, इट हैड अ हायर रेशियो ऑफ बॉयज़ कंपेयर टू विमेन. मैंने उसको इतनी डिटेल नहीं देखा कि मैं बता सकूं कि वो स्टेटिस्टिकली सिग्निफिकेंट था. ओके, चाइना की बात की ना, जब चाइना में ये हो रहा था तो गवर्नमेंट सेड कि डोंट किल द फीमेल चाइल्ड, यू जस्ट मेक देम पैदा होने दें, विल टेक देम फ्रॉम यू एंड विल एक्सपोर्ट इट अब्रॉड. तो फिर तमाम US, कैनेडियन और यूरोपियन नेशंस जो बच्चे नहीं पैदा करना चाह रहे थे, उन्होंने ये फीमेल चाइल्ड अडॉप्ट कर लिए 70s में, 80s में, इवन 90s तक. इवन अभी गवर्नमेंट ये एज अ गवर्नमेंट पॉलिसी. तो आप देखें कनाडा, अमेरिका और यूरोप जाएँ तो आपको बहुत सारे चाइनीज़ उसमें प्रोग्रेस करते हैं, वो उनके वहीं से अडॉप्टेड बच्चे हैं. Interesting. But later on government stopped doing this, Chinese government. Wow, okay, I didn't know that. That's very interesting. Okay. Yeah, तो I guess the point is कि अगर government level पे, for example, one child policy भी थी चाइना में, कोई large scale पे आप restrictions लगाएं, तो you may see that change in the next generation population level पे. मगर एवोल्यूशन जो है ना, वो केयर नहीं करती कि आपने 50 सालों के लिए क्या पॉलिसी की थी. रियली जब हम एवोल्यूशन की बात करते हैं तो हम अगले hundreds of thousands of years की बात कर रहे होते हैं, डिपेंडिंग ऑन कौन से एनिमल की बात हो रही है. शुरू में in the 1900s there was a certain German regime under which ये जो human selection program है genetically modify करके perfect humans बनाने का काफ़ी उसकी movement start हुई थी, और उसके बाद it was frowned upon. तो आजकल भी इस एरिया में research हो रही है. Is it an active research area these days? Okay, so by the way, this is a good point to have an audience question. Would you guys be interested in a lecture जिसमें हम रेस यूजेनिक्स बाय द वे इज़ द साइंस जिसमें हम ये देख रहे हैं कि सबसे बेहतर रेस बनाई जा सकती है कि नहीं इंसानों की, और इन चीज़ों के बारे में बात करें. तो इफ़ योर आंसर इज़ येस, तो रेज योर हैंड अप सो वी कैन गेट अ. ओके, सो पीपल आर इंटरेस्टेड, मे बी दैट शुड बी द नेक्स्ट लेक्चर. आई कैन ट्राई. ओके, आपका सवाल ये कि अभी भी रिसर्च हो रही है इस पे कि नहीं. अच्छा, ये ना थोड़ा इस पे हिस्टोरिकल पस मंज़र ये है कि डार्विन हिमसेल्फ वाज आस्किंग द क्वेश्चन कि अगर इनहेरिटेंस और नेचुरल सिलेक्शन काम करती है जानवरों पे और पौधों पे और मक्खियों पे, हर चीज़ पे, तो इंसानों पे भी करती होगी. और अगर हम जानवर को ब्रीड कर सकते हैं तो फिर हम ज़रूर इंसान की भी एक ऐसी, अच्छा दिस इज़ंट एज क्लियर कट एज व्हाट ही वाज थिंकिंग, बट मे बी वी कैन गेट अ ब्रीड ऑफ ह्यूमंस जो कि ज़्यादा इंटेलेक्चुअली केपेबल हों या फिर जो ज़्यादा बेहतर हों. और दे स्टार्टेड एन एंटायर मूवमेंट आफ्टर वी लर्नड अबाउट एवोल्यूशनरी थियरी विच वाज कॉल्ड द यूजेनिक्स मूवमेंट. और बहुत फेमस साइंसदान हैं जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया बायोलॉजी में, इंक्लूडिंग डार्विन.
Francis Galton was a scientist in the 1900s. उसके नाम पे यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन की बिल्डिंग है, द गाल्टन बिल्डिंग. बट ही वॉज अ यूजेनिसिस्ट, इवन दो ही वॉज अ ग्रेट स्टैटिस्टिशियन. उसकी वजह से हमें बड़ा कुछ पता लगा. बट ही क्लेम्ड कि हम शायद इस तरह की ब्रीड बना सकते हैं इंसानों की. और फिर और भी उस ज़माने में ना, जनरली दिस इज़ प्री वर्ल्ड वॉर्स एंड पोस्ट वर्ल्ड वॉर्स, यू हैड नीचा का आइडिया ऑफ द उबरमंश, जिसको फाशिस्ट लोगों ने फिर सोचा कि मे बी दे एसोसिएटेड दैट विद ब्रीडिंग and getting the perfect race. Darwin was interested in how the size of your skull could somehow suggest कि आपकी intellectual capacity क्या है. And then there were some very racist and just scientifically inaccurate studies on African Americans and people who weren't white. And this idea कि अगर आपकी नाक और वगैरह different है तो फिर शायद आप intellectually inferior हैं. उस ज़माने की जो रिसर्च है यूजेनिक्स की, अच्छा बाय द वे ये जो उस ज़माने की रिसर्च है, इट हैज़ implications still today. For example, you guys might have heard about the Mary Stopes Society. It operates in Pakistan. They're doing good work. They talk about reproductive technologies or uski education. Yes, sorry? They have a huge presence. They have a huge presence. Okay, I didn't know that. But Mary Stopes was a eugenics sort of proponent. She was a lady who thought कि ये जो South Asia वगैरह जैसे लोग environments हैं यहाँ पे maybe हमें population control करनी चाहिए. But the society is still called that. I don't want to criticize the society. They're doing good work. मगर नाम उनका अभी भी ये. बहरहाल उस ज़माने की जो रिसर्च है ना यूजेनिक्स की कि इंसान की बेहतर ब्रीड बनाई जा सके, that's largely been disproved now. क्योंकि हमें पता है कि things like intelligence, even things like height, उनकी कोई एक जीन नहीं होती. They are multifactorial. There's a large environmental influence. And then also any relationship between intelligence, for example, or these sort of multifactorial genes, वो race से इतनी ज़्यादा correlate नहीं करती. तो एक तो ये बात कि and that research at the time was ill-informed, basically because we just didn't have enough information about how DNA works. फिर दूसरा ये कि अब इसमें रिसर्च हो रही है कि नहीं हो रही है. So there was a very famous research paper जिसमें they showed कि A-level score जो है ना उसका एक बड़ा strong genetic component है. इसका ये मतलब है कि अगर मैं मोइज़ हूँ और मेरा एक ट्विन है और अगर मेरा A आ गया है A-levels में और मेरा ट्विन जो मेरे साथ भी नहीं रहता, हो सकता है वो किसी और फैमिली में चला गया था और वो मेरे जितना शायद पढ़ता भी नहीं है, इट इज़ मोर लाइकली कि उसका भी शायद A या A से करीब ग्रेड आएगा. तो इस तरह की रिसर्च इज स्टिल पब्लिश्ड. बट व्हाट आर योर थॉट्स ऑन जेनेटिक ड्रिफ्ट? तो उसमें ये है कि अगर एक छोटी कम्युनिटी हो और उनकी आपस में शादियां हों तो उससे कोई ख़ास सिफतें सामने आती हैं. तो मिसाल के तौर पर यहूदियों को लें तो वो बहुत इंटेलिजेंट हैं. हम ये देखते हैं कि जो बहुत बड़े बड़े साइंटिस्ट थे वो जूस थे और ये इसलिए हो सका कि वो अपने आप को औरों से जुदा रखते थे. तो इज़ दिस समथिंग दैट इज़ टेनेबल, द आइडिया ऑफ जेनेटिक ड्रिफ्ट? ड्रिफ्ट इसलिए कि एक बड़ी पॉपुलेशन हो तो जो ख़ास चीज़ें होती हैं वो फैलती चली जाती हैं, लेकिन अगर पार्टनर्स में भी वही ख़ास चीज़ हो, मिसाल के तौर पर मैथमेटिकल इंटेलिजेंस हो, तो फिर अगली नस्ल में वो चीज़ ज़्यादा नुमायाँ हो जाती है. या तो जेनेटिक ड्रिफ्ट एज वी आर टॉट इट इन अंडरग्रेड बायोलॉजी इज़ द आइडिया कि जब पॉपुलेशन छोटी हो जाती है तो फिर उसमें रैंडम इफ़ेक्ट ज़्यादा बढ़ सकता है. इसका ये मतलब है कि कोई ऐसी जीन जिसका कोई एडवांटेज नहीं भी था या बल्कि डिसएडवांटेज था वो पॉपुलेशन में फिर भी फैल सकती है. अगेन इट्स द सेम थिंग जहाँ पे अगर आप कॉइन फ्लिप कर रहे हैं, अगर आप 10 दफ़ा फ्लिप करेंगे हो सकता है 8 दफ़ा आपको उसमें हेड्स आ जाए या 7 दफ़ा आ जाए, मगर अगर आप 100 दफ़ा फ्लिप करेंगे यू स्टिल गेट 90 हेड्स, देयर इज समथिंग रॉन्ग विद द कॉइन, राइट? यू वुड एक्सपेक्ट 50-50 इफ़ यू डू इट 100 or 1000 टाइम्स. लॉ ऑफ लार्ज नंबर्स. तो जब पॉपुलेशन छोटी है उसमें यू कैन गेट यूनिक जीन्स एंड यूनिक म्यूटेशंस जो कि नेचुरल सिलेक्शन या
शायद ना भी चाहती हो कि इसमें फैले, या फिर उस पर कोई सिलेक्शन प्रेशर नहीं था, एडवांटेज नहीं था उस जीन का. तो या एज अ कॉन्सेप्ट वी नो अबाउट जेनेटिक ड्रिफ्ट, बट आई डोंट थिंक कि वी थिंक कि इंटेलिजेंस इन Ashkenazi Jews, by the way, is an interesting race, क्योंकि Ashkenazi Jews में there is a higher chance of certain diseases, and we think it happened because of genetic drift. But also one reason it happens is this thing called the founder effect. तो अगर आप अच्छा आप ना इंसानों का DNA लेके उसको सीक्वेंस करके आप एक स्टोरी बना सकते हैं about where we were and how we migrated and how we migrated out of Africa. तो Ashkenazi Jews में we think one thing that happened is founder effect, which is कि when these people जो कि बड़ी छोटी population थी, they re-established themselves in a different geographical location, एक और जगह पे गए, तो फिर जो वो छोटी सी population में genes थी, जब उन्होंने फाउंड किया इस Ashkenazi Jew population को, वो ही genes हैं जो अभी तक फैल रही हैं उनमें. इसका ये मतलब है कि अगर you know एक well I guess very oversimplification, but a very short person sets up a society and he mates with other short people because those are the people around him, तो फिर that is the children you will get. मगर as far as intelligence is concerned, what I know is कि it is multifactorial, just like height is. So I don't know of any research जहाँ पे they've suggested कि Jews, for example, have higher intelligence because of that effect, like genetic drift. You can probably select for it. Yeah, but they are overrepresented in the sciences. Yeah, but one reason for vastly overrepresented. Huh? Yeah. I wonder if that's just because of cultural reasons, because there was a lot of large migration, World War I and II, into the west of Jews, but that doesn't count on the time scale of 100 years. It has to be over the time scale of a few thousand years, or at least 1,000 or 2,000 years. I don't know the time scale. You mean intelligence has to evolve over a scale of several thousand years? Well, some particular trait getting more and more pronounced. Yeah, but if I divide this into two theories, what your theory is suggesting कि मेरी theory नहीं है मैं fair enough, yeah. मैंने कहीं पढ़ा. अच्छा, okay, I don't know about that research then. What it seems to me is कि if we are claiming कि Jews में intelligence propagate हुई over a course of thousands of years, and then that is why they are overrepresented in intellectual jobs, that is one possibility. Or it might just be कि as a consequence of migration to the West, at a time when also post-World War II, the West was rebuilding a lot of its intellectual capacity and economies, and that's when the Jews were found there more commonly. That is an alternative. So I guess my rebuttal would be that it is a cultural phenomenon, not a biological phenomenon. I don't know. I never read the research, so yeah. Yes. I have two questions. What do you think of same of sibling generations? Like my grandfather got 3 brothers, 1 sister. My father got 3 brothers, 1 sister, and now we are 3 brothers and 1 sister. How far this can go? हाँ, मैंने ना एक वो बताया नहीं, by the way, this is very important. वो जो मैंने आपके सवाल से मुतालिक है, वो 23 क्रोमोसोम्स हैं ना हमारे पास, तो और हमेशा पेयर्स में आते हैं, यानी कि आपकी अम्मा से आपको 23 मिलेंगे, आपके अब्बा से आपको 23 मिलेंगे, तो 23 पेयर्स बन गए. इसका मतलब ये है कि अगर 2 इंसान मेट करें तो देर आर 2 to the power 23, 2 raised to the power 23 different combinations of children, genetically speaking, that they can have. 2 to the power 23 का मतलब है तकरीबन 8 million, which is 8 times the size of Islamabad, right? And ये सिर्फ मैं genetics की बात कर रहा हूँ, और भी complex phenomena है जैसे recombination, जब DNA आपस में swap हो जाता है chromosomes के बीच में, जिसका मतलब है कि ये वेरिएशन और भी ज़्यादा है. तो अब आपके सवाल पे आ जाते हैं. फॉर मी टू से कि आपका जो फिनोमेना है कि आपकी हर जनरेशन में एक बेटी और फिर 3 बेटे हो रहे हैं,
for me to say कि ये statistically significant है, I would have to actually do the comparison with के well there are 8 million possibilities or there's a large sample size और yeah I guess अगर मैं experiment कर रहा होता तो फिर मैं कहता कि 4 children is not enough. अगर आपकी हर generation में if you give me at least 50 children or 20 and then उसमें वो percentage बरकरार रहे तो I would say it's statistically significant and an important phenomena जिसको study करना चाहिए. ये होता है वैसे by the way because there are ways, let's say कि you have a mutation on your Y chromosome जिसका मतलब है कि जो Y वाले sperm है वो healthy नहीं है उतने जितने X वाले sperm है. That means कि जो मर्द फिर वो sperm पैदा कर रहा है वो X sperm ज़्यादा होंगे और Y sperms जिनमें mutation है वो survive नहीं कर पा रहे. तो yes you can have that possibility and also इंसानों में तो नहीं but बाकी जानवरों में the female can also decide कि उसको लड़का पैदा करना है या लड़की पैदा करनी है and by decide I mean कि उसकी environment उसे बताती है. खैर ये आपके सवाल का जवाब अब नहीं रहा मगर this is very interesting if you can google it. There is a mite जो कि अपने अंडे अपने एब्डोमेन में देती है, वो बाहर नहीं देती और वो अंडे जब हैच करते हैं तो उनमें से कुछ मेल पैदा होते हैं कुछ फीमेल पैदा होते हैं और वो भी एब्डोमेन में ही अभी बाहर नहीं गए और वो मेल्स अपनी माँ के एब्डोमेन के अंदर ही अपनी सिस्टर फीमेल्स को मेट करते हैं. तो द मेटिंग ऑफ द नेक्स्ट जनरेशन इज़ हैपनिंग वाइल दे आर इनसाइड द मदर एंड देन द फीमेल्स दैट सर्वाइव, वो जो बहनें हैं उसकी जिनके साथ मेटिंग हुई है, दे स्टार्ट ईटिंग द मदर फ्रॉम इनसाइड आउट and then they hatch from the mother's dead body. तो ये बड़ा एक creepy और weird phenomena है मगर ये जो माइट है जो ये मदर है ये हमेशा एक लड़का पैदा करती है और बाकी सारी लड़कियां पैदा करती हैं because you only need one male to inseminate all the remaining females. तो yes, coming back to your point, ये जो ratio है of male and female ये change हो सकता है depending on different things like genetics and environment. But yeah. Okay. The second question was, what do you think about the surrogacy? Because they male and female don't meet for the upcoming generation. Yeah. So I think don't you think it's asexual production or sexual production? हाँ, I mean surrogacy है तो फिर भी sexual reproduction क्योंकि वो मैंने sperm कहीं से तो आया और वो एक egg भी was of 2 independent people, usually a couple, और बस जब वो egg fertilize हुआ उसको मैंने implant किसी और औरत ने किया. तो usually the way this happens is कि अच्छा by the way no one talks about the moral aspect of surrogacy, which is कि usually this technology is limited to people which have a lot of money and so you see a lot of actors and actresses doing surrogates. मगर होता क्या है कि एज अ कपल वी कैन डिसाइड कि हम चाहते हैं कि आप IVF करें और एक एग और एक स्पर्म हमारा इस्तेमाल करें टू मेक एम्ब्रियो. बस वो एम्ब्रियो की जो प्रेगनेंसी का टर्म है ना वो कोई और मुकम्मल करे तो वो इम्प्लांट किसी और औरत के यूट्रस में होता है. बायोलॉजिकली हमें पता है कि ये काफ़ी नहीं है कि आपने सिर्फ स्पर्म या एग डोनेट किया है. द प्रोसेस ऑफ हैविंग ए एग inside of a mother, the mother actually communicates biologically with the egg as it's developing. So one thing that happens is कि जब egg बहुत early stage में होता है तो फिर वो अपनी कोई genes इस्तेमाल नहीं कर सकता and the mother actually stuffs a lot of proteins in the egg which help it develop. तो जब हम surrogacy करते हैं तो जिस माँ ने वो fetus carry किया होता है उसकी बायोलॉजी भी अफेक्ट करती है उस फीटस की डेवलपमेंट को फॉर द लॉन्ग टर्म. फॉर एग्जांपल इफ शी वाज अ स्मोकर बिफोर शी वाज इम्प्रेग्नेटेड दैट विल अफेक्ट द एपिजेनेटिक्स, द DNA ऑफ द चाइल्ड जो पैदा होगा. तो एक तो ये बात, बट इट्स नॉट एसेक्सुअल राइट क्योंकि वो आपको स्पर्म और एग तो भी चाहिए. देयर इज़ अ कंपनी इन कैलिफोर्निया विच इज़ एक्चुअली यू गाइज कैन थिंक अबाउट वेदर दिस शुड बी अलाउड और शुडंट बी अलाउड.
there's a company in California जो कि is working on a technology जिसमें कि 2 sperms के ज़रिए बच्चा पैदा किया जा सके तो egg की ज़रूरत ही ना पड़े. And they haven't made much progress, but yeah, I'm sorry. सर जो इंसानों में जो थर्ड जेंडर है सर इसके बायोलॉजी के बारे में थोड़ा बताएं सर इसकी. हाँ यार ये ना एक तो ये कि इसकी परसेंटेज बड़ी कम होती है टोटल ह्यूमन पॉपुलेशन में. मुझे एक कंडीशन का पता है बट और भी ज़्यादा होते हैं. क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम एक कंडीशन है जिसमें आप XY की जगह आप XXY होते हैं तो आपके पास एक एक्स्ट्रा X क्रोमोसोम आया हुआ होता है. और फिर अमूमन क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम के जो लोग होते हैं वो ज़्यादा लंबे होते हैं मगर उनके जो सेक्सुअल ऑर्गन्स हैं वो होते हैं बट दे कैन बी डिफरेंट डिपेंडिंग ऑन वेदर दे प्रेजेंट एज मेल और फीमेल. और उसके साथ फिर सर्टेन हेल्थ कॉन्सिक्वेंसेस भी होते हैं. तो या आई मीन आई नो अबाउट क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम बट थर्ड जेंडर एक बहुत बड़ा वो कैटेगरी है. इसमें एक्चुअली हर सिंड्रोम मुख्तलिफ होता है और हर सिंड्रोम के मुख्तलिफ कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं. दैट्स ऑल आई नो. या ओके.